Hi, this is Prithviraj. I am an entrepreneur, I'm a photographer. I have done a lot of fashion shoots, I've worked with a lot of magazines, I have worked with a lot of models. I do keep on clicking a lot of fashion photographs. I have shot for magazines, I have shot for fashion designers, worked with a lot of fashion stylists. And I know that we all love traveling. In fact, I am also a very avid traveler and I love to travel all across the world. Welcome to my channel, Prithviraj MR Photography. So, what exactly are we going to do differently? Or what exactly are we going to learn differently today that will make your photographs stand out? Whenever you share it on Facebook, whenever you share it on Instagram, or maybe any other different social media channels, or definitely whenever you show it to your friends, what exactly you will do to create and compose such beautiful photographs. So I'll be sharing 6 tips with you today. Okay, so I'll be sharing 6 tips with you today, which will help you create good landscape photograph or click good landscape photograph. Now, the first tip that I would like to share with you all is whenever you're clicking a photograph, you need to think and compose. Okay, so when you are clicking a photograph, you need to think first. What exactly are you going to click? And then compose a photograph. Now, what I mean by think, whenever you're going, for example, if you're planning to go to Goa, you're going to Goa for the first time. Okay, now what will you have? What will you see? Before going to Goa, make sure that you are doing your homework properly. What exactly you will be seeing around, where the places where you are staying, or the places you are going to go and visit. Okay, the church, or maybe the beach, or maybe your there's a lot of waterfalls around while you're just driving around to Goa. Okay, so whenever you are going, before going out to Goa, okay, make sure that you are studying about Goa. Think before you are releasing that shutter. Whenever you are releasing that shutter, okay, before that, make sure that you are thinking about what exactly you want to compose, and then you release the shutter. Look around. Look around what exactly you are where the place where you're going. For example, if you are just going on a beach, okay, just look around. There will be people. There would be there would be beach. There would be sea around, and a lot of other things. So make sure that you know where exactly you're going. Change your vantage point. Okay, well, when I'm saying vantage point, you might want to, whenever you are on a beach and whenever you are clicking beautiful rainbow आपको vertical में तो नहीं आएगा. Okay, I'm sure आपको sea भी दिखानी है, आपको थोड़ा बहुत beach भी दिखाना है, and definitely you want to show the rainbow also. तो ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपका फोन हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा. तो फोन जब हॉरिजॉन्टल आप करते हो, तभी आपको पूरा बीच मिलेगा, एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ वाइड एंगल, अ लवली वाइड एंगल विद दैट रेनबो इंक्लूडेड इन द बीच. सो फर्स्ट इज लाइन ऑफ होराइजन आपकी स्ट्रेट रहेगी. ओके, सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, आपको आपका वेंटेज पॉइंट चेंज करना है. ओके, सो वेंटेज पॉइंट आप जब चेंज करोगे तब आपको वाइड एंगल मिलेगा एंड आपका फोटो अच्छा आएगा. थर्ड टिप आज मैं जो शेयर करने वाला हूं आपके साथ में, दैट इज बी सिलेक्टिव about what you are including in the frame. Okay, so make sure that whenever you are clicking a photograph, आपकी फ्रेम जो आप कंपोज करने वाले हो उसमें आप क्या क्या ऐड करते हो, इसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. ओके, सो say for example you see a nice lovely tree, okay, and you want to click a photograph standing in front of it. Make sure that whenever you are posing in front of the tree is, or along with the tree is not popping out right from behind your head. Okay, वो बहुत weird लगता है कि अगर आप सोचो, आप एक फोटोग्राफ देख रहे हो एंड आप एक एक ट्री के सामने खड़े हो. ओके, एंड वो बराबर आपके सर के पीछे से ऊपर से बाहर निकल रही है. विल इट लुक गुड? नो, इट इज नॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफ. ओके, सो आपको क्या करना है, आपको ट्री के साइड में थोड़ा खड़े रहना है. ओके, अगर आप उसको ट्री को इंक्लूड करना चाहते हो,
ओके तो फ्रेम इट केयरफुली, फ्रेम ऐसे करो कि लाइक नो पत्तों के बीच में से आप अगर कुछ लाइक नो फोटो खींच रहे हो, या साइड में पोज लाइक नो you're जस्ट लीनिंग ऑन द ट्री एंड लाइक नो you're क्लिकिंग अ फोटोग्राफ। तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू गेट अ लाइक नो लवली फोटोग्राफ। तो थर्ड टिप हम लोगों ने देखी कि बी सिलेक्टिव एज टू व्हाट यू विल इंक्लूड इन द फ्रेम। ओके, फोर्थ टिप ये है पोजिशन डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी केयरफुली। ओके, if you are photographing a large tree, a house, or a human being, okay, in an image, they should be big enough for the viewer to find it. ऐसे नहीं होना चाहिए कि लाइक नो आपका फोकस कहीं और है, आपके लाइक नो पोजीशन, आप जो एलिमेंट्स आप पोजीशन करते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्लिकिंग अ फोटोग्राफ ऑफ योर फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, ओके, तो वो रॉक बहुत ज्यादा दिख रहा है एंड फ्रेंड आपका सिर्फ हाफ दिख रहा है। ओके, तो वो आपका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, या बीच पे खड़े रह के आप जब फोटोग्राफ खींचते हो, बहुत सारे लोग हैं वहां पे एंड लाइक नो व्हेन यू क्लिकिंग दैट काइंड ऑफ फोटोग्राफ, ओके, तो आपका क्या होता है, आपका फ्रेंड कहीं लोगों के बीच में गुम ना हो जाए। तो फोटोग्राफ में पीपल शुड नॉट बी लाइक नो शुड बी एबल टू फाइंड योर फ्रेंड, कि आपको आपकी फ्रेंड की अगर फोटो खींचनी है तो डेफिनेटली आपका फ्रेंड शुड बी द सेंटर ऑफ फोकस। तो फ्रेम में क्या हो जाएगा, आप लोगों को फिर बाद में लाइक ना ये नहीं होगा कि एमलेसली कहीं पे भी लोग ऐसे वॉन्डर कर रहे हैं फोटोग्राफ में। दे शुड बी एबल टू सी योर फ्रेंड, दे शुड बी एबल टू सी पीपल अराउंड द फ्रेंड इफ यू वांट टू इंक्लूड पीपल। ओके, सो दे शुड बी एबल टू सी योर फ्रेंड, दे शुड बी एबल टू सी द पीपल अराउंड योर फ्रेंड। अगर पीपल को नहीं इंक्लूड करना है, एक साइड में ले जाओ डेफिनेटली लाइक नो एंड यू सी लवली एलिमेंट, से फॉर एग्जांपल रॉक पे बैठ के, या लाइक नो मे बी बीच पे बैठे बैठे, या tree around the trees and all those things, you can frame a lovely photograph. Okay, so make sure that you are positioning those elements which you want to include in the frame very carefully. Okay, it will make or break your photograph. With this we come to the fifth tip. The fifth tip that I'll be sharing with you is backgrounds and foregrounds. So when we are talking about backgrounds and foregrounds, say for example if you are standing on a beach, ओके, अगर आप बीच पे खड़े हो एंड आपको लाइक नो यू गेट नाइस क्लाउड्स एंड यू वांट टू क्लिक दोज लवली क्लाउड्स एंड यू वांट टू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम, ओके, तो आप क्या करोगे, लवली स्काई, यू नो, आप क्या करोगे, आपका फोरग्राउंड रहेगा आपका बीच, सो यू विल बी इंक्लूडिंग दैट बीच, मिड ग्राउंड वुड बी द सी एंड बैकग्राउंड वुड बी योर स्काई, ब्यूटिफुल स्काई विथ लाइक नो क्लाउड्स एंड लवली like you know lovely birds flying and all those things. You want to show that, definitely that will make or break your photograph. Okay, तो ये चीजें आपको याद रखनी है. First, your foreground, your midground and your background. Make sure, guys, make sure, again I'm coming to it, that make sure that like you know your line of horizon is straight enough to show in the photograph. Okay, second thing, आपको vantage point आपका चेक करना है. Okay, तो अगर आपका वर्टिकल फोटोग्राफ नहीं आ रहा है तो टिल्ट योर कैमरा, मेक इट हॉरिजॉन्टल. ओके, अगर आपको जूम करके नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली गो बैक, थोड़ा सा पीछे जाओ. ओके, एंड यू विल मेक श्योर दैट लाइक यू आर क्रिएटिंग अ वाइड एंगल फोटोग्राफ. एनी एम्प्टी स्पेस इन अ फोटोग्राफ विल एक्ट एज अ नेगेटिव स्पेस. इफ यू आर अनेबल टू गो क्लोज टू द सब्जेक्ट देन स्टेप बैक अ लिटिल. तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, ओके, टू क्रिएट दैट वाइड एंगल इफेक्ट. Think of different ways to create a lovely photograph. थोड़ा सा उसमें ड्रामा ऐड करना है, थोड़ा उसमें लाइक यू नो ड्रामेटिक बैकग्राउंड देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी इन क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप फोटोग्राफ. ओके, फर्स्ट योर बैकग्राउंड, सेकेंड थिंग इज योर फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड. तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है इन द फिफ्थ टिप. Sixth and the last step that I'm going to share with you is frame your subjects very effectively. आपको बाहर जाने के बाद आपको मिलते हैं बहुत सारे natural elements. Okay, जैसे for example you have like you know doors, you have windows. आपको मिल जाते हैं, अगर आप गोवा में हो तो definitely like you know you will see a lot of like you know shacks around where you can sit on the stairs, you can click lovely photographs, you can frame those photographs perfectly. तो जब भी आप फ्रेम करोगे फोटोग्राफ, से फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कहीं दरवाजा दिख गया, ओल्ड डोर, इफ यू फाइंड अ वेरी ओल्ड डोर लाइक यू नो ओल्ड हाउस समवेयर इन गोवा, देन डेफिनेटली यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट डोर एंड लाइक यू नो यू गेट दैट फ्रेम. दरवाजे की फ्रेम कहते हैं ना,
ओके, तो उसके सामने आप खड़े रह के आप जब फोटोग्राफ खींचते हो तो वो फ्रेम हो जाता है। मैं जब एक फैशन शूट कर रहा था, तो दैट वाज अ वेरी ओल्ड प्लेस, लाइक ओल्ड हट काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैं हट के अंदर बैठ के मैं फोटो खींच रहा था, एंड दैट डोर वाज रियली ब्यूटीफुल। तो मैंने मॉडल को कहा आप बाहर खड़े रहो। आई made sure that she's standing in that frame, and then I composed the photograph such that it came out very beautiful. Okay, so what I did was I used that door to my advantage to compose a very beautiful surrounding elements जो आपके पास available है, वो आप कैसे यूज करते हो अपने एडवांटेज के लिए। ओके, एंड यू क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ आउट ऑफ इट। ओके, तो आप ये 6 टिप्स जो मैंने शेयर किए हैं आज, आप डेफिनेटली याद रखना। इट विल मेक श्योर दैट योर फोटोग्राफ स्टैंड आउट्स व्हेन यू आर क्लिकिंग अ फोटोग्राफ। फर्स्ट, अगेन, थिंक एंड कंपोज। ओके, second, change your vantage point. Third, be selective of what exactly you are going to include in the frame. Fourth is position your elements, different elements, very carefully in the frame. Fifth, your backgrounds and foregrounds are very important. Sixth, frame your subjects very effectively. With this, we come to the end of this session. Okay, thank you so much. I will be coming up soon with a different video altogether. अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। डेफिनेटली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स. I will definitely come with a lot of such videos which will help you make your photography a lot better.